जब आप छोटे थे ना, तो आपको जब कुछ हो गया, लग गया, तो टीटी के इंजेक्शन के लिए लेके जाते थे। आप क्या बोलते थे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर भी डॉक्टर, वैसे आप बोल रहे हैं न्यूरोनेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी मैं डॉक्टर हूँ तो देना पड़ेगा। अभी सम कंसेप्ट्स आप यू मस्ट हैव स्टडीड कि मिड ब्रेन, और यहाँ पे होता है क्रस, क्रश नहीं, काय क्रश। सो आई हैव टोल्ड यू कि मेडिकल स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन स्टडीज. If somebody asks you, did you find your crush? You have to say crush cerebri. What is your crush? Crush cerebri. Boys, लड़की पटेली नहीं, हाँ, कौन पटेली? लिगामेंटम पटेली. वेरी गुड. बीबी का इंतजाम हुआ? बाइसेप्स. कौन है बीबी? गर्ल्स, क्या मेडिकल कॉलेज में आके आपको आपका बीएफ मिला? मिला. कौन है आपका बीएफ? बाइसेप्स ह्यूमरस. ऐसे ही आप अगर चालू रखोगे तो यू विल बिकम गुड डॉक्टर्स. लेकिन इधर ये छोड़ के आप इसमें लड़की पटेली के पीछे पड़ गए, बीबी मिलेगी क्या? अरे इधर तुम लोग पढ़ने के लिए आए ना, क्या बीबी करते हैं? बीएफ चाहिए, क्रश चाहिए? नो. सो विथ दैट लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द क्रश सेरेब्री एंड न्यूरोएनाटॉमी. तू नाही बंद केलंस तू? सो एंटायरली आई विल नॉट बी टीचिंग न्यूरोएनाट. मैं आपका कुछ हिस्टोलॉजी का रिवीजन भी कराऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ चलेगा. हाँ, आपके काइंड परमिशन. हाँ बोलिए. एग्जाम में फाइनल, थर्ड फाइनल, नीट एंट्रेंस, पीजी नीट, इधर तक न्यूरोएनाट आएगा. हाँ, तो लाइफ में इतना अच्छा अभी नहीं आएगा. तो आप स्विच ऑफ होके बैठ सकते हैं. जिनको लाइफ में बड़ा बनने का है वो लोग सुन सकते हैं. जिनको छोटा ही रहने का है हम आँख बंद करके सो सकते हैं. हाँ छोटा है. तो का म्हणे व्हावे लहाना होणं लहान, ज्याच्या अंगी मोठेपण तया यातना कठीण. So brainstem, when you look from the front, there are two crush cerebri. Crush cerebri are also called as cerebral peduncles. Cerebral peduncles. That means we have one right hemisphere, we have left hemisphere. Whatever fibers are coming down from the cerebrum are there in the crus cerebri. Therefore crus cerebri is also called as cerebral peduncle. And it is there in the anterior part of the midbrain. So midbrain में anteriorly there is crus cerebri, and posteriorly in the midbrain, if you try to see what is there posteriorly, on the posteriorly there are these four swellings called as corpora quadrigemina. Superior colliculus, inferior colliculus of the right and the left side. Superior colliculus is concerned with visual reflexes, and inferior colliculus is concerned with auditory pathway and reflexes. That means superior colliculus is not a part of visual pathway. It is just a part of visual reflexes.
while inferior colliculus is a part of auditory pathway and auditory reflexes also. Okay. त्यांना लेक्चर ऐकवतो माझं. So below the crus cerebri is basilar pons. All of you know the sequence. There is midbrain, there is pons, and then there is medulla. Okay, then there is medulla. So crus, pons and medulla. So pons, anterior portion is called as basilar pons. In the basilar pons again are the same fibers. In the basilar pons इथं काहीतरी झालंय रे, तेल लागलंय का काहीतरी. ओके, सो दिस इज बेसिलर पॉन्स. सो वो जो क्रस के फाइबर्स है, नाउ दे पास इन बेसिलर पॉन्स, मतलब सेरेब्रम की फाइबर्स. ओके, एंड देन देयर इज मेडुला, एंड these fibers here in the medulla, it forms a swelling called as pyramid, a swelling called as pyramid. And so midbrain, so brainstem, when we look from the posterior aspect, things look completely different. On the posterior aspect of brainstem is cerebellum, and between cerebellum and the brainstem is fourth ventricle. मतलब पीछे से ओपन है, पीछे से ओपन है, आगे से ऐसे. Right now we are concentrating on this. पीछे से upper lower part of pons and upper part of medulla open है. बाकी lower part of medulla, upper part of pons is closed. Okay. Now here I am drawing cerebrum. Our cerebrum is different from the cerebrum of animals, and we have a prefrontal cortex. Therefore, all of us have a forehead which is vertical, while an animal will have a forehead which goes slanting, because that prefrontal cortex is not so well developed, and this prefrontal cortex, where frontal lobe is there, where area number 9, 10, 11 and 12 are there, it is the one which is responsible for intelligence. It is the one which is responsible for decision making. Okay, so that is prefrontal cortex. आप यहाँ पे जो बैठे हैं मेडिकल कॉलेज में, इट इज बिकॉज ऑफ योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. नहीं क्या बोलूँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बिकॉज ऑफ योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने जो नीट में परफॉर्म किया अच्छे से, इसके लिए आप इधर वैसे गलती होगी वहाँ से. सो वो जो गलती वगैरह का जो लैमेंटेशन होता है वो लिम्बिक लोब में होता है, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा. राइट नाउ आप यहाँ कैसे आए, तो से थैंक यू टू योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 9, 10, 11, 12. इसके एरिया अपन बाद में सीखेंगे. यहाँ पे एक सेरेब्रम में सर्कस होता है जिसका नाम है सेंट्रल सर्कस. सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस के आगे एक सर्कस होता है जिसका नाम है प्री सेंट्रल सर्कस, उसके पीछे एक सर्कस होता है जिसका नाम है पोस्ट सेंट्रल सर्कस. तो सर्कस, प्री सेंट्रल सर्कस एंड पोस्ट सेंट्रल सर्कस. ऑल ऑफ यू, जनता कम कैसे हो गई? हाँ हाँ, वीकेंड. अच्छा, ये सप्ली वाले लोग हैं, सप्लीमेंट्री में. नासिक, पुणे, औरंगाबाद, लातूर भी. ओके, सप्लीमेंट्री. ओके, ठीक.
सराटे सर यांचे नंबर आत्ताच नोट करून ठेवा, आपण त्यांना सप्लिमेंटरीचं आहेत ना ठीक. तर ते येणार 100%. असं क्लासेस बुडवले तर त्यांचं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेव्हलपच होणार नाही आणि देन दे विल नॉट बी इन अ पोझिशन टू अपियर फॉर फर्स्ट MBBS exam. Okay, so now sulcus and gyri. Sulci and gyri are there on cerebrum. Sulcus, which is behind the central sulcus, is called as post-central. Sorry, gyrus, which is there behind the central sulcus, is post-central gyrus, and this is pre-central gyrus. उनके नाम भी ऐसे हैं. So pre-central sulcus, pre-central gyrus, central sulcus, post-central gyrus, post-central sulcus. समझ लो 5 गोष्टी. Okay. So there are 3 gyri. Okay. So 2 gyri, 3 sulci. 2 gyri and 3 sulci. That central sulcus is also called as a limiting sulcus because इसके आगे जो है वो मोटर एरिया है. इसके आगे है मोटर एरिया, पीछे है सेंसरी एरिया. आगे है मोटर एरिया, पीछे है सेंसरी एरिया. एकदम वो डिमार्केटिंग है, इसके लिए उसको लिमिटिंग सल्कस बोलते हैं. वी कॉल इट लिमिटिंग सल्कस बिकॉज बिहाइंड इट इज सेंसरी, ahead of it is motor. This precentral gyrus, उनको सबको नाम दिए रहते हैं ना, तो यहाँ पे प्रीसेंट्रल गायरस में कौन सा एरिया है? सेंसरी. सॉरी पोस्ट सेंट्रल. पोस्ट सेंट्रल में कौन सा है? सेंसरी. सो दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज नेम नंबर्ड एज 312. 312. त्याला 312 म्हणायचं नाही एग्जाम मध्ये. ओके, क्या बोलेंगे? 312. पीछे से दिख रहा है आपको? 312. Now this, initially when I taught you, I said is sensory area. Now I am going one step ahead and I am telling you this is the primary sensory area. Primary sensory. Okay, प्राइमरी सेंसरी एरिया. और ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बियॉन्ड देर इज एरिया नंबर 5 and 7 पैराइटल लोब में, विच इज सेकेंडरी सेंसरी एरिया और एसोसिएशन सेंसरी एरिया. एसोसिएशन सेंसरी वुड बी अ बेटर वर्ड. एसोसिएशन सेंसरी एरिया, समझे? एसोसिएशन सेंसरी एरिया. सराटे सर दिसते का तुम्हाला? हाँ, एसोसिएशन सेंसरी. तो चीफ सेंसरी और प्राइमरी सेंसरी, उसके पीछे एसोसिएशन सेंसरी. इसका फर्क क्या है? आपको अगर किसी ने कान के नीचे बजाया, बजाया नहीं ना, किसी ने मिला रहेगा घर पे वगैरह कहीं, तो सब गरम होता है, गरम. पहला सेंसेशन ना 312 को जाता है हमारे बॉडी में. ऑल सेंसेशन गो टू 312. They are stored in 5 and 7. Stored. They are stored in 5 and 7. The experiences are stored in 5 and 7. So जैसे आपको कान के नीचे पड़ते थॉट, पहले 312 में जाता था. 312 5 and 7 को पूछते ये क्या था? बोले तेरे को बजाया. हाँ, जो रूटीनली लोग मार खाते बजाते रहते उनको तो 312 ही पहचान लेता है. बट अदरवाइज हमारे जैसे डिसेंट लोग जो कभी कभी मस्ती करते हैं तो बोलते बजाया वो सेंस. सो बेसिकली 312 रिसीव्स ऑल सेंसेशंस, 5 and 7 स्टोर्स. वैसे ही प्री सेंट्रल गायरस में देर इज एरिया नंबर 4 एंड दैट इज द प्राइमरी मोटर एरिया. प्राइमरी मोटर एरिया, समझे? था समझे आपको? सेंट्रल सल्कस पाछड़
क्या है उसमें आगे? नाउ दिस इज प्राइमरी मोटर और उसके आगे देयर इज प्री मोटर. प्राइमरी मोटर और प्री मोटर. प्राइमरी मोटर 4 नंबर इज प्राइमरी मोटर. देन इज प्री सेंट्रल सल्कस और उसके बियॉन्ड फ्रंटल लोब में देयर इज प्री मोटर. प्री मोटर तो आपको ये एरिया समझे. प्री मोटर, मोटर प्राइमरी मोटर, प्राइमरी सेंसरी, एसोसिएशन सेंसरी. अभी जो कान के नीचे बजाए आपको लड़के नहीं बजाए, आप लड़का हो और आपको लड़के नहीं बजाए, लड़की हो ट्रेन में पनवेल से आते वक्त और लड़की नहीं बजाए आपको, फिर वो 3 1 2 5 7 5 7 से वो आपके लिम्बिक लोब में जाएगा, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. वो सब डिसाइड करेगा कि क्या करने का. ओके, क्या करने का जब डिसीजन हो जाएगा ना, ये सब सर्कल में से जाके वो 6 के पास जाता है और आपने डिसीजन लिया कि मारने का, वापस मारने का. बहुत हो गया, बरोबर की नाही याला असं सहन थोडी करायचं असतं, मारने का. तो फिर प्री मोटर विल प्लान कि तुम्हारा हाथ ऐसा आगे जाएगा. वो पहले बॉयज का बताता हूँ. तुम्हारा हाथ ऐसा आगे जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड से कॉलर पकड़ेगा और राइट हैंड 100 किलोमीटर पर आवर की तुम्हारे. गर्ल्स तुम्हारे दोनों हाथ आगे जाएंगे, उसके बाल पकड़ेंगे. तो ये सब डिसाइड होता है प्री मोटर में. तो प्री मोटर में ओके, जरा सा पॉज कर. ओके, अभी मारने का जब प्लान हो गया तो नाउ कमिंग टू टुडेस टॉपिक, जो यहाँ से एरिया नंबर 4 से जहाँ पे बेड सेल्स, पिरामिडल सेल्स होते हैं, वहाँ से निकलता है हमारा ट्रैक्ट कॉल्ड एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट also called as pyramidal tract. Corticospinal tract also called as pyramidal tract. मैं जनता से डर के पॉज नहीं करता हूँ. मेरा फैमिली आधा नहीं हो, 75% फैमिली मेरा कांग्रेस में है अभी. माय ग्रैंडफादर, my grandfather was in Congress. He was a freedom fighter. He was chief minister of the state. मैं वर्षा बंगला पे वगैरह रह चुका हूँ. पॉज कर. So corticospinal tract starts from area number 4. थोड़े से फाइबर 6 से भी आते हैं, थोड़े से फाइबर 6 से भी आते हैं. All the fibers of the brain, all the fibers of the brain, all the fibers of the brain, they come together like this, like this, like this, like this, together, and they pass through a structure called as internal capsule. Right now I am not in a state of teaching you what is internal capsule. एक दिन मैं आपको सिखाता हूँ. इंटरनल कैप्सूल ऐसा वी शेप रहता है, मतलब वी शेप भी नहीं बोल सकते हैं आप उसको. तो क्या ये इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल जो ऐसे थैलेमस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस के बीच मीडियल साइड ऑफ थैलेमस पे रहता है. मतलब ये ट्रांसफर सेक्शन है, सारे फाइबर्स उसमें से पास होते हैं. तो उसके इंटरनल कैप्सूल के एंटीरियर लिम्ब होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है, और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में से पास होते हैं. पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल. ओके, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल. इंटरनल कैप्सूल बाद में सिखाएंगे आपको.
बट सारे फाइबर्स सेरेब्रम के वहाँ पे एक साथ आते हैं, गोइंग अप गोइंग डाउन. कॉलोनी तो इथे ऐकलेलं तो लोकांना दोनचा असता माहिती नहीं असं तो निकले. तो हमारे टाइम पे ना अगर सरल बस लड़कियां बाल को अगर काट के नहीं आते थे ना तो प्रिंसिपल पादरी लड़की लोगों को इवन डिसेक्शन हॉल में वैसे बाल कभी गिरे ना तो मैं ऐसा एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हूँ. ये लड़की को बाल काटने को बोला था, काटा नहीं क्या. फिर मैंने गुस्से में उसको इधर एक थोड़ा सा काटा, इधर थोड़ा काटा, तो थोड़ा बाल कटे. दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन थोड़ा सा यहाँ पे आपको आर्टरी डैमेज हो गया सेरेब्रम में, यहाँ आपको नहीं सॉरी पेशेंट को यहाँ पे इतना इशू नहीं होता. बट मेरे को सलोनी पे एक्चुअली गुस्सा है, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ. आ गया था, फिर मैंने सीजर लिया और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे अगर मैंने वो सीजर से काटा तो दैट इंश्योर्स कि उसके सारे जो बाल है वो कट जाएंगे. दिस पॉइंट इज लाइक इंटरनल कैप्सूल. ऑल द फाइबर्स ऑफ सेरेब्रम कमिंग टुगेदर. ओके, ऑल द फाइबर्स ऑफ सेरेब्रम कमिंग टुगेदर एंड देन गोइंग डाउन. सो थैंक यू सो मच. ताली बजाओ उसको. So that is internal capsule. Damage to internal capsule leads to deep hemiplegia. Deep hemiplegia होगा. बाकी यहाँ पे थोड़ा डैमेज हो जाएगा, पैराप्लेजिया हो जाएगा, थोड़े लिम्स डैमेज हो जाएगा, बट यहाँ पे डीप हेमिप्लेजिया होगा. ओके. So passes through the posterior limb of internal capsule, then passes through the crus cerebri. Crus cerebri. एक मिनट पॉज करना भी. So it passes through the crus cerebri. Now suppose we are discussing this of the left hemisphere. ये left side का हम लोग discuss करें. Then it passes through the basilar part of pons. ये part. Crus, then basilar part of pons. Then it passes through the pyramid of medulla. Pyramid of medulla. So midbrain में crus, pons में basilar part, medulla में pyramid. Everybody is understanding this? शेवटचा bench. Pyramid. In pyramid, what happens is decussation. The fibers cross to the opposite side. So left के fibers right side को जाएंगे. कुछ fibers continue करेंगे नीचे as anterior corticospinal tract. As anterior corticospinal tract, but majority fibers will go as lateral corticospinal tract. Lateral corticospinal tract. And they will go and act on the spinal cord and act on the spinal cord, influence the spinal cord. Okay, so they will end on the spinal cord. This also, majority of them before ending they cross to the opposite side. Actually, before ending they cross to the opposite side. This is how our left hemisphere controls the right side of the body. Right hemisphere controls the left side of the body. So fibers come down till the pyramid of medulla on the same side. Okay, and at the pyramid level they cross. That is called as pyramidal decussation. Pyramidal decussation. Decussation, crossing. Pyramidal decussation. Okay. When there is damage here, there is damage here, किधर भी damage होगा, either even in the cerebrum, opposite side of the body will be affected. Opposite side will be affected. Hemi means half, plegia is paralysis. But आपने अगर हेमिप्लेजिया का पेशेंट अगर देखा रहेगा,
हमको पैरालिसिस मतलब क्या लगता है मालूम है क्या? पैरालिसिस ऐसा, हाथ का पैरालिसिस, ऐसा नहीं। पैरालिसिस में क्या होता है? दिस इज अपर मोटर दे आर मोर ऑफ कंटिन्यूअसली डिप्रेसिंग, कंट्रोलिंग द लोअर मोटर्स विच आर इंट्रिंसिकली एक्टिव. स्पाइनल कॉर्ड इंट्रिंसिकली एक्टिव. ओके, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपको एक this spinal cord is intrinsically active. Start. This spinal cord is intrinsic. क्या बोलो? 3, 2, 1. हाँ, क्या बात? This spinal cord is intrinsically active, very active, like Gen Z. वो Gen Z की तरह. फिर ये क्या है? Cerebrum. Cerebrum is your parent. That is always उसको निगेटिव से कंट्रोल करते थे. हे पढ़ाई कर, टीवी मत देख, ये मत कर, ये कर, पढ़ाई कर, मोबाइल बाजू में रख. पेरेंट. तो होल हायर सेंटर्स आर लाइक पेरेंट्स. स्पाइनल कॉर्ड इज जेन जी. उसको कंटिन्यूअसली कुछ तो चाहिए. तो एक दिन वो पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो हम लोग सब गाँव जा रहे हैं लेकिन तुम अभी मेडिकल में हो, तो नाउ यू हैव टू स्टडी. So we all are going to Shirdi and you will be studying because your first terminal is coming close. We'll study ना? I study. फिर हम लोग अपार्टमेंट से देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठ के, गाड़ी गेट के जैसे बाहर जाते हैं हम लोग टीवी ये वो. We become so that you become hyperactive. That is what is upper motor neuron lesion. That upper motors are affected, lower motors become hyperactive, and therefore you see a paralysis patient, his muscles will not be like this, spastic. His muscles will be, will not be flaccid, they will be spastic like this. इसका हाथ ऐसा करता है, ऐसा होता है, ऐसा करता है, ऐसा. Because spinal cord is Gen Z, intrinsically hyperactive. So now that negative control of the cerebrum is gone. तो ऐसे ही. ओके, थैंक यू. वापस चल. नाउ व्हेन द जेन जी बिकम्स सिक, तुम ही खुद बीमार हो गए. तो वो कैसे पेट में खाने पीने कुछ नहीं चाहिए. दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज फ्लैसिड. Because spinal cord itself is damaged. मतलब spinal cord is damaged, तो therefore वो flaccid हो जाता है. वही खुद नहीं कर पा रहे. Okay? So lower motor neuron is flaccid, upper motor neuron is spastic. Thank you. तो